Assalamu alaikum and a very warm welcome to the platform of 101 Incredible Women of Pakistan, a platform which really believes in women who are doing out of the world tasks. Like, for instance, they're constantly upskilling themselves and they are doing things out of the box. Let's meet a couple of two people around me. Both of them, the duo is working incredibly, unbelievably superb. Both of them, they just decided whatever Allah has granted them, the talents, the information, knowledge, confidence, communication skills, whatever they had in themselves, they just came up with an idea कि why not share with others. Normally हमने देखा है कि जब भी जो भी खवातीन हैं planet Earth पे, they are very beautiful, pretty, whatever talents they are carrying with themselves, they normally try to retain it to themselves. लेकिन इन दोनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्हें अल्लाह ताला ने जो भी इनायत किया है, इन्होंने कॉन्स्टेंटली दूसरी खवातीन का हाथ पकड़ा है और उन्हें स्पेशली दोस्त जिनकी एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स रिसोर्सफुल लाइफ, ये उनको डिलीवर करने के लिए दोनों निकल चली। आइए दोनों से मिलते हैं और जानते हैं कि ये आइडिया उनको कैसे अकर हुआ और फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए उन्होंने किस तरह डायरेक्शन सेट किए। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। महविश सुल्ताना और अमरीन अस्करी, इन दोनों के बारे में मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करूँगी। व्हेन आई स्पोक टू अमरीन अस्करी ऑन द फोन एंड वी हैड दैट ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये क्या कर रही हैं, कैसे हुआ एंड एवरीथिंग। सो उस वक्त ये कॉन्स्टेंटली बार बार कह रही थी कि नहीं, आई हैव अ काउंटर पार्ट विद मी एज वेल। मैंने कहा जी जी इट्स ओके, इट्स फाइन, एंड शी वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हर काउंटर पार्ट महविश। सो मैं उनको बात, जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो गया कि बोथ ऑफ देम दे विल बी कॉल्ड अप एंड बोथ ऑफ देम, आई मीन व्हेन अनलेस एंड अनटिल शी बिकेम वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट, so then she said okay fine and everything got settled, further appointments and everything. So I really appreciate कि normally बहुत कम ऐसा होता है, सारा credit people they love to keep it to themselves, but she was very much conscious about it. Mehvish, I can see a very good chemistry between you both of you. Certainly. So Mehvish, I'll start with you कि ये कैसे आपने start किया, I mean how this idea occurred to you, अमरीन से कैसे मुलाकात हुई और फिर कैसे चीज़ें जो directions आपने set किए and you started working. All right. First of all, thank you for having us. That's a pleasure. The pleasure is all ours. Thank you. So I met Ambreen in 2015 when I joined an international school. She was serving there already. And during the that time period, we were given trainings from Oxford and many other prestigious local and international forums. When we would go and give those trainings to our other teachers, we were in-house trainers in that school, we noticed that there are young ladies who are very passionate, लेकिन they are scared क्योंकि उनके पास वो opportunities नहीं है जो हमारे पास हैं, वो access नहीं है. So that was the time when we both realized, okay, so I think we need to step in. And आपको पता है कि जब भी आप कोई organization, कोई forum, किसी किस्म की भी चीज़ form करते हो, so you need a lot of resources. It's just not human resource. You need a lot of money. You need many other resources. बहुत risk है. Yes. So we sat together and we thought, okay, we don't have financial resources with us. We have our salaries, but still we need to give what we need to. We need to give back it to society. तो हम ऐसा करते हैं. We have our energy. We have our knowledge. We have our time. We have our, that positivity. Yes, that we can share with them. So she said, bingo. So of course we had a detailed discussion. We talked with our families because, of course, Ambreen, you must be having so many other people around you. You must be working as trainers and everything. She specifically chose her to be she is a giver. That was the very first and thing. And you identified while yes, she was a giver because when whenever we were in the staff room, so anybody who would need any kind of counseling, she would be there. She would always volunteer herself, and she would not mind if her lunch is being skipped, if she has to sit extra after school hours. अच्छा मुझे इसको call करना है, नहीं just wait, I need to talk to that lady, she looked disturbed, I need to give that extra time to that child. वो आज नहीं, he was not in himself today. So then I said, okay, this is a person, she's a philanthrope, but we need to sit together, join our energies, join our resources that we have, and then we can be a good team. So yes, you're right, there are wonderful people around you, but then those vibes that you get from I can see that. I've been feeling that since I've been talking to you. She comes to my home when she started coming. So my parents took her as a daughter and they totally love her, and of course her family loves me too. I'm sure they do. So
So the connection became even deeper. I mean, since you both were working in an organization, obviously you must be drawing some handsome amount of salary from that particular organization. But you came up with an idea, which is not at all money making, monetarily, that is not going to support you at all. Lekin obviously, जब आप ऐसा काम करते हैं, तो family or people around you, they're not very much encouraging towards this thoughtful process and everything. So initially when you started up with Mehvish, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं रहने तो अच्छी भली जॉब करियो, क्या जरूरत है, कैसे होगा, क्या होगा, घर को कौन टाइम देगा, आगे जाके क्या होगा, पीछे जो छोड़ा है उसका क्या होगा, experience and blah blah blah. There are so many repercussions normally that comes to you whenever you are leaving something which is generating money for you basically. So how you coped up with that? It's true कि I have faced those things. लेकिन actually when I started, मैंने अपनी studies जो थी अपनी marriage के बाद start की. And they already knew कि I'm very passionate about it. But one thing मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि मैं अपनी family को कभी भी disturb ना करूँ. मेरे 2 बच्चे तो नहीं, अब अमरीन पैसे नहीं आ रहे हैं. आपको बताऊँ कि from where it has started. So they already knew कि अच्छा ये रुकने वाली नहीं है. But the thing which I always care कि मेरी family किसी तरह से disturb ना हो. When I started that thing कि मैंने अपनी studies की, then I learned skills और बहुत से courses किए घर में रहते हुए. Then I started the job. जैसे महविश ने कहा कि हमें already बहुत ज़्यादा trainings और ये सब चीज़ें मिल रही थी. और जो idea जहाँ से start हुआ कि when I saw मेरी And why was that so? I mean, were you both very good in you had very strong communication skills? क्योंकि normally लोगों के पास knowledge तो होती है. हम जब pass out करते हैं किसी भी degree holders को, तो उसमें normally सबका एक knowledge का information का level तो same होता है. लेकिन उसमें से you people were the ones who were, delivering whatever was given to you. So उसके लिए आपको क्या लगता है, वो क्या knack था that actually was brought you forward amongst the rest of the lot? यही बता रही थी कि when I was doing one of the courses and there I used to tell many things to the girls. So every day they come to me and ask कि ये कैसे करना है, आप हमें इस चीज़ का बताओ. तो जब मैं उनको बताती थी, they used to listen to me and I give them different tips कि lesson planning कैसे करते हैं, how you can deliver your lecture in the class, अच्छा इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं. Then I realized कि हम ये चीज़ें सर्विस दे सकते हैं. When we have this skill, हमारे पास ये टैलेंट है, लोग हमें सुनते हैं. Like she mentioned that मैं लोगों से काउंसलिंग करती थी और मुझे अच्छा लगता था कि मैं लोगों को सुनूं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं. जब मैंने ये चीज़ें देखा कि नहीं, they need it, हमें तो मिल रहा है. प्राइवेट स्कूल्स में आपको बहुत सी चीज़ें, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स मिल रही होती, बट दे कांट अफोर्ड. ऐसे स्कूल्स में या ऐसे ट्रस्ट स्कूल्स में इन लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही. और जिस तरह से वो मेरे पास आते थे कि प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा इसका बताओ, और मुझे बड़ा मज़ा आता था बताने में. देन वी स्टार्टेड कि महविश हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड डेफिनेटली जब हमने हम शुरू में एक चीज़ें थोड़ा सा हम नहीं घर में बताते थे. आफ्टर स्कूल हम एक 1 आवर निकाला करते थे एंड यूज्ड टू गो टू डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट स्कूल्स में जाके हमने उनको बताना कि जी हम वी वांट टू डू दिस वर्क, हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं. हमने थोड़ा वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया कि जब आप अपनी फ्री सर्विसेज देते हैं, people are normally not very positive about it. They do for granted कि अच्छा क्यों आप कहाँ करते हैं ट्रेनिंग. So we told them कि हम वॉलंटियरली करना चाहते हैं जो चीज़ हमारे पास. कभी-कभी लोग ये भी सोचते हैं maybe they are doing it initially or later they are going to charge us, or they might be having some hidden benefit. Exactly. So फैमिली में जब हमने बताया तो जब मैंने बाद में इनको तो डेफिनेटली मैंने कहा आपको क्या मिलेगा, आप अपना इतना टाइम भी दे रहे हो, इतनी आप एनर्जी भी दे रहे हो, तो इट वॉज नॉट अबाउट मनी. हम दोनों में एक चीज़ ये बड़ी कॉमन है कि हम लोग बड़े एनर्जेटिक और पैशनेट अबाउट कि हमने कुछ करना है. हमने कभी भी पैसे को बीच पे नहीं लाया. ऑल्दो वी फेस प्रॉब्लम, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हमने उनको ही यूज़ किया. हमने कहीं से किसी से कुछ कहा नहीं, ना फैमिली से कहा. लेकिन जब आपको शौक हो ना किसी चीज़ का कि नहीं यार हमारे पास जो है हमने देना है, तो वहाँ से फिर ये चीज़ें बिल्कुल रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं. फैमिली को डेफिनेटली मेरी फैमिली को इन्होंने कन्विंस किया, मैंने इनकी फैमिली को किया. हम लोग क्रॉस किया करते थे कि अच्छा आप उनको बताते थे कि why we are doing this. Then they realized कि नहीं, इनको कोई नहीं रोक सकता. See, we have a very good strategy here to be followed. कि जब भी आपने कोई नया काम करना है तो दोनों, if both of you are sitting in the same boat, तो आप पहले एक बंदा एक जाए और फिर दूसरा जाए और फिर इससे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी and you'll be coming up with something marvelous. So that actually worked. And you know what, when we started off with the MLS Garage School and we started teaching the children of the very less privileged people who were living around us, all the children of the maids and the janitorial staff of the colony, and when those kids would come and learn and we made our parents and our relatives part of that joy they gained
from those little faces, then they realize, okay, so that's what you get out of it. When they recognize and there is that no you have given us parallel to something. what feeling I Yes. can very well relate to it. Yes. You get whenever you see, oh my God, I've done Yes. this and I've made a difference in somebody else's life. Exactly. Mehvish and Ambreen, both of you, why you have chosen this name, multidimensional? What is Okay. Yes. So when we started, it was not only women that we wanted to work with. Though we started off with teachers when we both saw that they're lagging behind. They want to, but they're lagging behind because of the resources. But then we thought there's a wide range. There's array of things that we can teach. It's Canva. It's communication. It's her motivational, counseling, and then there's English speaking and presentation skills. And then if you talk about audience, there too we have the horizon is so big. So why starting from a child to an adult to women and to men and to old people, we wanted to reach out to everybody who wants it, and that we did. We went to a lot of trust NGOs, government schools, and we spotted few areas where we have spotted few areas and we go there regularly and we teach. And even during COVID, we have been there. We have Seriously? been there, and the videos are... everybody, they were very much conscious of this strain of virus. And you really need to watch those videos, because I still remember Ambreen ने एक जगह एक मेड के बच्चे को बताया कि आपके अब्बू आते हैं ना, तो आपने उनको ना रास्ते में रोक लेना है और उनको घर में आने से पहले ना बाबा हाथ धो और मास्क पहनो। तो उसके बाद वो अगले दिन वो मेड हमारे घर में आई, इन्होंने बड़ा अच्छा सारा समझाया, हमने ट्रेनिंग दी जो हमारा तरीका है। आपने मेरे बच्चे को क्या कहा है? मैंने कहा क्या हुआ? हम उस गैराज स्कूल हमारा ऑन था, तो उसकी मामा घर आ गई, कहती है वो मेरा बंदा घर आया और उसने कहा बाबा रुक जाओ, मास्क पा के आओ। That's a I mean, success. yeah, just what I was saying, you're such a good teacher. That, I mean, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला, ऑल्दो हमने शुरू में रेजिस्ट आया पेरेंट्स की तरफ से कि क्योंकि वो लोग कोविड पे बिलीव नहीं करते थे कि कोविड नहीं है, बट व्हेन वी स्टार्टेड तो वो एग्जैक्टली वो रोजाना वेट करते थे बच्चे भी कि ये कब आएंगे और हम इनसे ये चीजें सीखेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज कराएंगे। ड्यूरिंग कोविड जब सारे लोग घरों में थे तो हम लोग इन एरियाज में जाके वी यूज्ड टू डू दिस वर्क, और हमने बड़ा इस चीज़ को एंजॉय भी किया। और सबसे ज़्यादा बच्चों का जो रिएक्शन था, और जैसे वो अपने पेरेंट्स को बताते थे, फिर पेरेंट्स हमें आके कहते थे कि ये आप जो चीज़ें बताते हो ये हमें कहते हैं। अमरीन, कभी डर नहीं लगा कि मेरे घर में मैं कोविड ले आऊंगी, मेरी फैमिली मेंबर्स को, या those my dear ones they will get it? आपको अपने काम से मोहब्बत हो ना तो फिर वो कहीं पीछे रह जाता है बहुत लोगों में। हम दिमाग में दोनों कीड़ा का होता है। एग्जैक्टली हम दोनों में इतनी केमिस्ट्री भी और इतना हमारा एक ही जैसा माइंड रहा कि हम दोनों ने ये चीज़ कभी सोची नहीं है। हम लोग जैसे गाड़ी में प्लान करते थे और कहते थे बस कल से हमने ये चीज़ करनी है, और माशाल्लाह इट्स बीन वी स्टार्ट इन 2017 और अब तक हम करते ही चले जा रहे हैं, और कहीं पे हम माशाल्लाह से रुके नहीं, बट एवरी डे वी केम विद अ न्यू आइडिया कि हम इस चीज़ को अब किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। और हम वी आर गिविंग डिफरेंट सेशंस और डिफरेंट ट्रेनिंग्स, और उसमें हमारे पास हर जो हमारी ऑडियंस है वो हर एज की आ जाती है। वी प्लान हम इस दफ़ा इन वाले बच्चों के लिए करेंगे, अब हम अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए करेंगे, अब हम मदर्स के लिए करेंगे। सो वी हैव दीज आइडियाज जो हम हर सैटरडे या कि हम वीक में जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। Every Saturday we have सैटरडे हम सैटरडे मिस नहीं करते। So we throw a topic and we throw the day. So should it be Saturday or Sunday? और ये हमारे पास time slots हैं। Why Sunday? Because we do job as well. So we never leave our job. You know, when we were talking to Ambreen के monetary terms के हवाले से, so we never left our job. Okay. So every So day, you were holding both ends. after school. So we would spend 2 to 3 hours outside at different spots, going to knocking at different, trusts, organizations, and going to government schools and NGOs, and to those 2 areas that we had spotted. और उसके बाद हम घर आते थे शाम में. And then we would start with our routine. And alhamdulillah, family supported. And again, that's because when they saw our videos and they saw the reaction and the input that we were giving, they said, God bless you. We'll take care of it. And the things went on in the right way. करूँगी कि your family
should be your priority. It should be your priority. हम लोगों ने ये कोशिश की, हमने एक अपना टाइम रखा हुआ था कि इसके बाद we have to go home, इसके बाद हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कभी कि हमारी फैमिली किसी तरह से भी डिस्टर्ब हो, कि वो कि जी मामा घर. Ambreen, this is a very good tip that you have shared with us today, that you have to set your parameters for everything. Once you have set them, so everything, whatever you're doing, they are going to stay in the good places. That reminded me, once one of my coordinators, she gave me an area of work to do, and she gave me that advice कि मदिया, अगर तुमने जिस वक्त का जो टाइम है उस पे वो कर लिया और वो अगर इनकम्प्लीट भी है तो उसको अगले दिन उसी टाइम के लिए रखो. The things are not going to get collapsed at all. Thank you so much for coming here and joining us and adding a lot of beautiful colors to our show. But I just want to ask, agar aaj se 5 saal baad, let's suppose we'll be sitting together again, what things we will be talking about? We will be talking about our passion, which I would say would have. It's going to get multiplied again and again and again. More teaching and training and motivating people, because we are committed that we are going to reach out to those who are less privileged, who need access to what we have access to. So we would be telling you that these were the areas we hadn't covered, and we have reached those milestones, inshallah ta'ala. Ambreen. बिल्कुल सेम आइडिया, बट आई वुड लाइक कि मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस हो जहाँ पे हम इन सबको वेलकम करेंगे. दिस इज़ अ राइट प्लेस, प्लीज़ कम, नो हेजिटेशन, कोई आपसे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि आई हैव सीन, जैसे यू टोल्ड मी अर्लियर कि गर्ल्स आर, लेडीज आर लाइक फेसिंग प्रॉब्लम्स, कि उनको बहुत सी लोग आपको कभी भी वेलकम नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते. देयर ऑल एग्जैक्टली नहीं करते. औरत जब भी कोई काम करना स्टार्ट करते, बहुत नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, घर को कैसे टाइम दोगी. लेकिन अगर मुझे इवन जो औरतें आप लोगों के पास आती भी होंगी, उनको भी लोग कहते होंगे कि क्या इन जैसा बन जाओगे, हमने कौन सा मॉडर्न सोसाइटी में जाके ये करना वो करना. I know, but you know there are different perceptions you have to deal with. बिल्कुल, it's a piece of information. ताकि जो बच्चे आगे आ रहे हैं, अगर माएँ ही थोड़ी सी पढ़ी लिखी हों और उनको एक मैनेज करना आ जाए चीज़ों को, तो मेरे हाल में वो एक बेटर फ्यूचर दे सकती हैं. सर हमारे ये आइडिया था कि हम उनको एक प्रॉपर तरह से गाइड करें कि आप घर में रहते हुए भी यू कैन डू मैनी थिंग्स. आप घर में बैठ के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, आप घर से कारोबार शुरू कर सकते हो, आप घर से अपनी स्टडीज़ कर सकते हो. लाइक आई डिड, मैंने प्राइवेट किया, आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट. मेरे दोनों बच्चे थे, मैं रात को पढ़ती थी कि कोई डिस्टर्ब ना हो और मैं अपनी स्टडीज कर लूँ, मुझे कोई रोके ना. So both of you are a perfect combination of women, those who are taking care of your families, your children. Like Mehvish, she was telling us previously that she had a son, और वो इनके बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा involved हैं, उसको भी time देती हैं. Similarly, you achieved everything after you got married. You took care of every minor detail of your house as well. Thank you so much. It was lovely talking to you both, and inshallah ta'ala we'll be looking forward for a lot more talks ahead. Thank you so much for coming.